I've seen your pictures with Karan Johar and Ori. I specifically want to talk about them. Oh my God, Karan Johar. उससे मिलके ना वही हुआ, क्या करूँ हाय, कुछ Is he a sweet होता। guy or snobbish kind He's of guy? very sweet, yeah, and I was surprised how sweet and warm and humble he was. And मैंने बहुत जोर से बोला करण हाय, सो उसको लगा कि उसका कोई दोस्त उसको बुला रहा है जिस तरीके से मैं बोल रही थी. And then he just looked at me and he was like, yeah, hi, do I know you? I was like, no sir, big fan. Then I told him about my show and he was like little interested because he has a similar show. So by the way, our show was the OG. Bollywood Vibes हमारे बाद आया है. ठीक है. तो मैंने ये नहीं बोला लेकिन but I told him about, I was like कि उन्होंने कहाँ सुना होगा. But let me tell you a quick fact. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करेंगे ना, आपको एक रील मिलेगी, बहुत दिलचस्प रील मिलेगी. रील ये थी कि in 2019 when my show came, I said, and it's an original dialogue, मैंने खुद बोला है, खुद लिखा है इसको, कि judgment is like dandruff, झाड़ो और आगे बढ़ो. And in one of the Big Boss episodes where he's hosting in the Big Boss OTT, he said this dialogue, judgmental ना dandruff की तरह होता है, छड्डो और आगे बढ़ो. And I have a reel where I am saying this and then Karan Johar is saying this. And I was like, and I tagged him in that reel. I don't know if he's seen it or not, but it was a huge moment for me. It was a huge boost for me कि मेरा dialogue Karan Johar जी बोल रहे हैं. And that too on such a huge popular show, Big Boss OTT. तो हमारी मूवीज की बात वगैरह हुई. देन ही सेड व्हाट ब्रिंग्स यू टू कैन. सो देन आई टोल्ड हिम इसी साल मेरी मूवी स्क्रीन हुई थी इन कैन्स फिल्म फेस्टिवल. And it was not like a major screening. We just had a small, very small theater. It was a huge deal that we actually got a screening. मैं 7 साल से कांस जा रही हूँ. And the first year we just represented the movie and I walked there and I was totally new. अब तो लोग मुझे कांस क्वीन एंड प्रो बोलते हैं. तो दिस ईयर इट्स अ बिग थिंग दैट आवर मूवी गॉट स्क्रीन्ड देयर. एंड ये जर्नी के बारे में बहुत थोड़ा उनको डिटेल में बताया. एंड देन ही हैड टू रश बिकॉज द नेक्स्ट डे इनकी होम बाउंड की स्क्रीनिंग थी. एंड दैट वाज इन दैट ग्रैंड थिएटर लुमिनायर, द बिग वन, द पैले, जिनके हम वो देखते हैं स्टेप्स वगैरह. सो he entertained me, he listened to me. It was a big deal for me. मतलब उन्होंने अपने कीमती 4-4.5 मिनट मुझे दिए होंगे. एंड विद हिम उनके फ्रेंड एंड उनके बिजनेस पार्टनर अपूर्वा वाज देयर, जो उनके साथ धर्माटिक में एंड धर्मा में है. He was quietly like, listening to me. And then I said while he was leaving, I was like, can you please take a picture of me with him? Even he quietly said yes. And Karan Johar was like more than welcome. He's like, yeah, sure, please come. I was like, okay, he's the big man. And then Ori was fun, yaar. Ori, I also met Ishan Khattar twice. Okay, for the homebound. No, not for the home. He was there for homebound. But we met. So वहाँ पे ना बहुत सारे events and parties होती है. I had attended BMW की party. And he was just getting out of it. I was entering. And we briefly chatted. And we spoke. And कैन का मैं एक चीज़ बताऊँ, माहौल बहुत अच्छा होता है. बिकॉज यहाँ इनके वो बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. अच्छा सर से नहीं मिल सकते, ये नहीं कर सकते, टाइम लेके आना पड़ेगा. वहाँ देयर लाइक जस्ट यू एंड मी, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. एंड वो बहुत, जिसको बोलते हैं ना, खुले तरीके से रहते. कोई भी फैन उनके पास आता है, दे विल मीट यू, दे विल ग्रीट यू, दे विल टॉक टू यू वेरी नाइसली. So it was like fun catching up and chit-chatting with him. I met Janvi, but I could not get clicked with her because her manager was rushing her to go and attend an event, a pre-release event. वहाँ कैन में क्या होता है, जो मूवी ग्रैंड थिएटर लुमिनायर में होती है या फिर ऑफिशियल सिलेक्शन होता है, उनका एक फोटो ऑप होता है अलग से. उनका एक तरह से प्रेस मीट होता है, वहाँ की मीडिया को वो बुलाते हैं. तो I just wish मैं 5 मिनट पहले आई हुई होती. She smiled at me and before I could click a picture with her, her manager just took her like, we have to go, we're getting late. I was like, oh my God. And she's so beautiful. She's so... Janvi, very pretty. Janvi Kapoor. नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी कि सुंदर है, क्योंकि मैंने कल ही होमबाउंड देखी है. तो हाँ, she is beautiful. She's on her mother. Completely. She's on her mother. Completely on her mother.
and she's like really well maintained. Yeah, I think all of them are. They have to. Yeah, I mean it's their bread and butter. But you know, as compared to others, I'm talking on a comparatively scale. Okay. I think what works for her is she's curvy. She's not skinny. Yes. What's with Ori? Ori was fun, yeah. So, quick news for you. Ori, Khushi Kapoor, Vedang Raina, and another friend of theirs. These guys were like chilling. And again, Khushi and Vedang that time were in their incognito mode. They were literally like, you know, in jeans, like a normal tee, cap and shades. And this was outside a cafe. So वहाँ पे ना वो pavement पे बहुत सारे cafes छोटे छोटे होते हैं. This is a very French thing. It's really nice. It's like those cute little coffee shops. So I'd gone there for a coffee. These guys were like, you know, how talking and all that. And थोड़े distance पे थे, तो I could only recognize Ori. Because Ori has this different style, you know. And then I came up to him and I introduced myself. And I said, I'm from Dilly Darlings. He's like, oh yeah, I've seen that show. I was like, okay, okay. And then it was fun talking to Ori. I was talking to him about the crazy reels that he makes. And I was like, aapko ye kaun reel ke ideas deta hai? And then I was just, you know, side by side checking out, okay, that's Khushi. I was like, oh, should I get a picture with her or not? But I'll tell you what, I don't disturb anybody if they're having a personal time. Yeah. And the fact that she was just in her normal athleisure or casual wear and with a cap and with shades, that means she did not want it to be disturbed. She didn't want to be recognized. And she didn't want to be recognized. So I was like, you know, let's just leave it. Let's just focus on Ori. And और क्या बात हुई और बहुत easy मतलब and हाँ एक और बात हुई, we both were wearing ivory white that day coincidentally, and I was like, guy, you know, we're twinning. And then he was like laughing. I was like, don't worry, I've not intentionally done this. I was not you know, after you always, I was not spying on you, what will Ori wear, so I'm going to match with him. This none of this has happened. So again he was laughing. And then I think he was also looking there. I think he wanted to go back and join these guys. So I was like, let's get a picture. And he's like, yeah, sure, why not, we must. He said, we must get a picture. Nice. It was fun. Yeah, I mean, I can't tell you. I've met Anupam Kher. I went for his press con for Tanvi the Great. Okay. Boman Irani was there. Karan Tacker was there. The entire cast of Tanvi the Great. What a movie, yeah. What a movie. And Anupam Kher was so warm again. These people are really good. You know, मैंने एक चीज देखी, आप जितना जिस एक height पे जाते हो ना, आप उतना विनम्र हो जाते हो. You get even more rooted. I think एक और चीज़ है, when you meet these folks in India ना, there are yes, you said there are a lot of barriers. There is a lot of their PR team handling नई and maybe पता है क्या, वो शायद आज भी मैं एक बात बताऊं, कोई भी कलाकार, कोई भी famous media personality, कोई भी public personality, उनको चाहिए लोग अपने आसपास, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं. ये PR वालों एंड ये मैनेजर्स एंड टीम्स एंड एजेंसीज, ये लोग बैरियर क्रिएट करते हैं. वरना आप किसी भी पुराने स्टार के पास जाओगे ना, वो हंसते खेलते आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, आपको बुलाते थे, बड़े प्यार से आपको बैठाएंगे भी. ये सब बैरियर क्रिएट करने का फंडा अभी स्टार्ट हुआ है कि यू नो, अरे भाव बढ़ेंगे. बट बिलीव मी, यू आस्क एनीबडी राइट नाउ ना, you're working hard for your podcast, कल को आप फेमस हो जाओगे, आपको यही चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, वो आए मेरे पास, राइट? सो देन माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि जब आप इतनी मेहनत इस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो लुक एट द आयरनी, आप उसी चीज़ को रोक रहे हो अपने आप के लिए. माने मैं ना एक स्टोरी से कंक्लूड करूँगा इस टॉपिक को जो आपका था, कि दे आर अप्रोचेबल. हाँ, वेरी मच. मैं आई एम नॉट श्योर, आई डिडंट टेल यू मच अबाउट माई. मैं जब IT में, मेरे को करीबन मैंने 13-14 साल काम किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और मैं 1-1.5 साल US रहता था. तो मैं न्यू जर्सी रहता था, तो हम वीकेंड्स पे कहीं पे न्यूयॉर्क चले जाते थे, और ठंड होती है उस टाइम पे. और मैं एक क्यू में था, और मैंने यहाँ पर देखा कृति खरबंदा बैठी है रेस्टोरेंट में, एंड व्हेन आई लुक्ड एट हर, शी लुक्ड एट मी.
एंड आई फेल्ट कि मेरे को उस टाइम होता है ना भाई कि मैं जाके बात करूँ उससे, और मुझे था एंड शी वाज वेलकमिंग कि कर सकता है बात। मैं यूँ करता रहा, फिर सामने एकदम डोर खुला और मैं वॉशरूम में चला गया, तो मेरे लिए वॉशरूम इंपॉर्टेंट था। Sorry, this is made up, ठीक है। I couldn't come with a good story, but ठीक है।